Syllabus area C, that is the working capital management. Syllabus area D, that is the investment appraisal. And syllabus area E, which is the business finance. A 50-50 split. 50% narrative and 50% calculation part is going to be there. Hello everyone, if you have the ACCA FM exam coming up, then this video is for you. I'm going to be talking about the top tips to achieve success in your financial management paper. And these tips and tricks are not just coming from me based on my experience, but also aligns with the examining team's guidance on your FM exam. FM का एग्जाम ऑब्वियसली बिल्ड्स अपॉन योर ब्रॉड फॉरवर्ड नॉलेज ऑफ MA. तो अगर आप एग्जाम्शंस रूट के थ्रू आए हो, प्लीज फिल इन द नॉलेज गैप ऑफ द एग्जाम्शंस दैट यू हैव टेकन फॉर योर FM एग्जाम. ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस किसी भी पार्ट ऑफ द सिलेबस से टेस्ट हो सकते हैं, विच मीन्स एंटायर सिलेबस इज एग्जामिनेबल. What you need to do is to make sure that you're answering all questions. अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा अनश्योर भी हो, प्लीज मेक एन एजुकेटेड गेस. क्यों? क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है एंड यू ऑलरेडी हैव इतना नॉलेज कि प्रॉबेबली यू आर कंफ्यूज्ड इन 2 ऑप्शंस, बट जो उसमें से बेस्ट ऑप्शन लगती है, मेक दैट एजुकेटेड गेस. नेक्स्ट ऑप्शन, all parts of the constructed response questions must be answered. Now this is going to be checked by a human, so please note that you make your workings very clear, make it very presentable for that human to check your answer sheet. Now make sure that you know the fact that ACCA follows the own figure rule. ओन फिगर रूल का क्या मतलब है कि अगर आपने कोई कैलकुलेशन एक बार गलत कर भी दी, सो यू आर गोइंग टू बी पेनलाइज्ड जस्ट वंस फॉर दैट मिस्टेक दैट यू हैव डन. उस गलत फिगर के बेसिस पे अगर आपने आगे का पूरा क्वेश्चन ठीक सॉल्व किया है, यू विल स्टिल बी अवॉर्डेड मार्क्स इन ACCA. अब बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रही हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट एरियाज कौन से हैं विच जनरली गेट एग्जामिन्ड इन योर सेक्शन C. You cannot ignore syllabus area C, that is the working capital management. Syllabus area D, that is the investment appraisal. And syllabus area E, which is the business finance. This along with mix and match of other syllabus areas are definitely going to be examined in your section C of the FM exam. Now, most important, technique, most important tip which I need to tell you is that FM exam is going to follow a 50-50 split. 50% narrative and 50% calculation part is going to be there. You cannot ignore theory in your FM exam. Quickly summarize करते हैं key points को. You have to study the whole syllabus. You have to do lots and lots of practice from the CBE practice platform. You have to understand and discuss the technique which you are using in the exam. Make sure you are giving due respect to theory in your syllabus, because exam is going to have a 50-50 split in theory and numerical part. Make sure you include and label all your workings clearly, specifically for questions like working capital, net present value and cost of capital calculations. Your working area and your cross labeling is extremely important. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विच कुड मेक अ डिफरेंस बिटवीन योर पास एंड योर फेल इज टाइम मैनेजमेंट. 1.8 minutes per mark is all you have to address all the requirements of the question, including the narrative part. So please read the question very carefully, answer all the requirements very carefully and allocate time as per the marks awarded for that subsection of the requirement. तो मतलब अगर एक क्वेश्चन में 3 सबसेक्शंस है, 3 सब रिक्वायरमेंट्स है, तीनों को आपको आंसर करना है. तीनों के मार्क्स के बेसिस पे यू हैव टू एलोकेट द टाइम दैट यू आर गिविंग टू दैट पर्टिकुलर सेक्शन. So that's it then. All the very best for your upcoming FM exam. All the best. That's it. Thank you. God bless.